एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पर। आज हमारे साथ हमारे एक और बहुत पुराने मित्र सीए ऋषु गुप्ता जी भी अ, हमारे साथ हैं। वेलकम ऋषु भाई। Uh, Thank you, C. Rajendra Arora ji, for inviting me to this telecast of आज का IPR. जी सर, थैंक यू सर। आज का जो टॉपिक है हमारा वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के ऊपर है। आज मैंने इस वीडियो को थोड़ा सा डिफरेंटली ऑर्गेनाइज करने की कोशिश की है। ऋषु जो हैं हमारे, जो बहुत पुराने मित्र हैं, ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पे, और इनकी वाइफ भी सीएस नेहा गुप्ता जी जो हैं वो भी हमारी बहुत पुरानी मित्र हैं। तो ये दोनों जो मिलकर बेसिकली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के ऊपर एक्सक्लूसिव काम करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम दी registration to even appearing before various authorities also, consultancy about everything। और ये जो भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितना भी काम हो सकता है हमारी कंट्री में नहीं, इवन आउटसाइड इंडिया ऑल्सो रिशू कर रहे हैं, नेहा कर रहे हैं। तो हमारा जो आज का जो अरेंजमेंट है वो इस तरह से है कि हम लोग पहले ऋषु जी से सुनेंगे कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या है फटाफट, और उसके बाद सेकंड लिम में मैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के जो जीएसटी रिलेटेड इश्यूज हैं उसके बारे में बात करूंगा। तो आई वुड रिक्वेस्ट ऋषु भाई टू प्लीज स्टार्ट विथ। First of all, we need to understand कि intellectual property होती क्या है. It is a creation of human minds. मैंने अपने दिमाग का इस्तेमाल करके जो बनाया वो मेरी intellectual property है. Rights क्या है? It is there are specific laws in intellectual properties जो कि गवर्न करते हैं कि मेरे राइट्स क्या हैं और मेरी ऑब्लिगेशन क्या है विद रिस्पेक्ट टू माय ट्रेडमार्क्स, विद रिस्पेक्ट टू माय पेटेंट्स, कॉपीराइट, डिजाइन एंड जियोग्राफिकल इंडिकेशन। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आर लीगल राइट्स, ये लॉ में लिखे गए हैं तो इसलिए लीगल राइट्स। गवर्निंग द यूज ऑफ क्रिएशन ऑफ ह्यूमन माइंड, जो भी मैंने बनाया, मैंने एक ट्रेडमार्क बनाया तो उसके लिए वेरियस मेरे राइट्स क्या हैं विद रिस्पेक्ट टू the patents, the copyrights, and various other things. They usually give a creator an exclusive right over the use of his or her creation for a certain period of time. ऐसा नहीं है कि जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आपने एक ट्रेडमार्क बनाया वो हमेशा के लिए आपके साथ है। जब तक आप उसका रिन्यूअल करते रहेंगे तब तक वो आपका है, अदरवाइज इट डज नॉट बिलोंग टू यू। नेक्स्ट इज इट इज एन इंटेंजिबल एसेट। जो भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं मेरे, वो मेरे इंटेंजिबल एसेट्स हैं व्हिच आर रिकॉग्नाइज्ड इन द बैलेंस शीट ऑन द एसेट साइड। They can be sold, they can be gifted, they can be assigned and licensed like any other property। जो भी मेरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है मैं चाहूँ तो उसको यूज कर सकता हूँ। अगर मेरी प्रॉपर्टी बन चुकी है वो, तब मैं चाहूँ तो उसको किसी को गिफ्ट कर सकता हूँ, बेच सकता हूँ, और वो उसको असाइन भी कर सकता हूँ। मान लीजिए मेरे पास एक ट्रेडमार्क है, सपोज माय नेम इज हल्दीराम, so I want to distribute its franchise, so I can assign it also to someone else। मेजर लॉज गवर्निंग आईपीआर के जो वेरियस स्तंभ हैं जिनके ऊपर आईपीआर टिका है वो क्या क्या है? पेटेंट्स, न्यू इनोवेशंस जैसे कि कोविड की मेडिसिन, कोई नेविगेशन सिस्टम इन अ कार, वो पेटेंट्स में कवर रहता है। ट्रेडमार्क्स, नाम, व्यापार चिन्ह, ट्रेडमार्क्स, ट्रेड में जो मार्क्स यूजर हैं, मार्क्स की हम डेफिनेशन देखेंगे क्या क्या कवर होता है मार्क्स। जियोग्राफिकल इंडिकेशन, designs, various designs of car, various designs of a cell phone, the flip cover, the mobile cover, copyrights, copyrights में आपका कवर होता है जैसे कि बुक्स कवर होती हैं, आपके आपके सॉफ्टवेयर कवर होते हैं। तो ये 5 स्तंभ है जिनके ऊपर आईपीआर टिका है। और जो लॉज हैं, देयर आर स्पेसिफिक लॉज अंडर विच दे आर रनिंग। आइए एक एग्जांपल देखते हैं विद रिस्पेक्ट टू आईपीआर कि एक ही प्रोडक्ट में जहां पर मल्टीपल आईपीआर इन्वॉल्व है। जैसे कि एक ट्रेडमार्क है, एक फोन है नोकिया का, उसमें एक ट्रेडमार्क है नोकिया प्रोडक्ट 225। स्टार्टअप टोन जो उसकी है वो भी उसका एक ट्रेडमार्क है। कॉपीराइट, जैसे सॉफ्टवेयर का कॉपीराइट होता है, जो उसका यूजर मैनुअल है, हाउ हाउ वी नीड टू यूज अ नोकिया फोन, वो उसका कॉपीराइट है। रिंग टोन, उसका स्टार्टअप टोन्स और उसकी इमेजेस, वो उसका कॉपीराइट है। पेटेंट्स एंड यूटिलिटी मॉडल, जो उसका डाटा प्रोसेसिंग यूनिट है, कैसे वो ऑपरेट करेगा, जो उसका ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेशन ऑफ यूजर इंटरफेस, वो उसके पेटेंट्स हैं। डिजाइंस, फ्लिप कवर,
मोबाइल कवर, पोजिशनिंग ऑफ द कीज, वो उसका डिजाइन एक्ट में रजिस्ट्रेशन होता है। तो आप देखेंगे कि जो एक प्रोडक्ट है, सिंगल प्रोडक्ट, मोबाइल फोन, छोटा सा दिखने वाला मोबाइल फोन जो कि हर किसी की पॉकेट में है, तो यू कैन इजीली सी कि उसमें एक ट्रेडमार्क भी इन्वॉल्व है या मल्टीपल ट्रेडमार्क्स इन्वॉल्व है, कॉपीराइट्स इन्वॉल्व है, डिजाइन्स इन्वॉल्व है या पेटेंट्स भी इन्वॉल्व है। नेक्स्ट, अब हम देखेंगे ट्रेडमार्क क्या होता है। ट्रेडमार्क मीन्स अ मार्क, ट्रेडमार्क पहले तो अगर हम इसको देखें, ट्रेडमार्क व्यापार चिन्ह, जो सिर्फ व्यापार में यूज होते हैं उसकी हम यहाँ बात करेंगे, अदरवाइज नॉट। सपोज आई हैव अ साइन जो कि मैं पर्सनल पर्पस के लिए यूज करता हूँ, नॉट फॉर द पर्पस ऑफ माय बिजनेस, तो आई कैन नॉट यूज दैट थिंग और गेट इट रजिस्टर्ड अंडर द ट्रेडमार्क साइन। इट मीन्स अ मार्क केपेबल ऑफ बीइंग रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली, ग्राफिकली का मतलब ग्राफ पेपर पे जो प्लॉट किया जा सकता है, बनाया जा सकता है, अंकित किया जा सकता है, and which is capable of distinguishing the goods and services of one person from those of others। जैसे कि आप नीचे देखेंगे ये का लोगो है, and I would like to wish my all viewers a very happy CA day on this occasion। जैसे कि आप देखेंगे सीए का लोगो है नीचे और आईसीएसआई का लोगो है, तो वी कैन ऑलवेज डिस्टिंग्विश जो सीए का लोगो है, दे आर प्रोवाइडिंग ऑडिटिंग सर्विसेज अंडर द इनकम टैक्स एक्ट, एंड आईसीएसआई का लोगो डेजिग्नेट करता है सेक्रेटरियल सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द ऑफ इंडिया। तो दिस इज द डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर जो कि जो दो ब्रांड्स अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है वो उसको डेजिग्नेट करता है। अगर वो उसमें कैपेसिटी है ये के लोगों में और आईसीएसआई के लोगों में, तो इट इज गुड एनफ टू बी रजिस्टर्ड एज अ ट्रेडमार्क एंड में इंक्लूड शेप ऑफ गुड्स, देयर पैकेजिंग एंड कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स। तो जो उसकी शेप ऑफ गुड्स है, जो उसकी पैकेजिंग है या कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स है, तो भी हम वेरियस ट्रेडमार्क एक्ट में रजिस्टर कर सकते हैं। देयर आर सम एग्जांपल्स ऑफ द ट्रेडमार्क्स। आईसीएससी का सी इंस्टीट्यूट का जो लोगो है वो है ये, आईसीएसआई इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, एडिडास का लोगो, एडिगॉन का लोगो, नेस्ले का लोगो। अब हमने ऊपर बात करी थी ट्रेडमार्क, व्यापार चिन्ह। मार्क क्या क्या होता है जिन जिनका रजिस्ट्रेशन हो सकता है, आइए वो देखते हैं। Here is the definition of mark. Mark includes a device, brand, heading, label, ticket, name, signature। सिग्नेचर का भी अगर कोई व्यक्ति अपने सिग्नेचर का ट्रेडमार्क कराना चाहता है, they want to use their signature as their trademark, they can get it registered। Word, letter, numeral, shape of words, packaging, or combination of colors or any combination thereof। Suppose I want to get my name registered as my trademark, I want to use my name as my trademark, I can do। Brand, heading, कोई भी मेरा लेबल है जिसमें कि मेरे there are some slogans, there are some headings, there are some letters, there are some numerals, I can get them registered with the trademark authority। जो व्यापार चिन्ह है तो इन जो ये चीजें इंक्लूड करते हैं, ये वर्ड्स इंक्लूड करते हैं, उनके लिए मैं अपना व्यापार ट्रेडमार्क रजिस्टर करा सकता हूँ। जो वैलिडिटी ऑफ अ ट्रेडमार्क होती है, इट इज फ्रॉम द डेट व्हेन आई मेक एन एप्लीकेशन, और वो 10 साल की होती है वैलिडिटी फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन। इट इज एन इम्पॉर्टेंट लाइन, इट इज एनीथिंग विच आइडेंटिफाइज अ ब्रांड टू अ कॉमन कंज्यूमर। जो भी अंकित करता है ब्रांड की मेरी सर्विसेज, अंडरलाइन सर्विसेज क्या है, इट कैन बी एनीथिंग, जैसे कि कोई नंबर ही हो गया, कोई साइन ही हो गया, कोई शेप ऑफ गुड्स ही हो गया, या कोई कॉम्बिनेशन ऑफ कलर ही हो गया, वो भी ट्रेडमार्क के एक्ट में रजिस्टर हो सकता है। एडवांटेजेस ऑफ ट्रेडमार्क, इट गिव्स एक्सक्लूसिव राइट टू द ओनर, ये सिर्फ मेरा राइट है। एज सुन एज आई गेट द रजिस्ट्रेशन और आई मेक एन एप्लीकेशन फॉर द रजिस्ट्रेशन, आई गेट द एक्सक्लूसिव राइट्स ऑफ द ओनरशिप। इट इंडिकेट सोर्स ऑफ ओरिजिन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, ये इंडिकेट करता है कि ये किसकी प्रोडक्ट है। सपोज आई एम बाइंग अ नेस्ले प्रोडक्ट और दे आर लॉन्चिंग अ न्यू प्रोडक्ट अंडर द नेम ऑफ नेस्ले, so I know the brand owner is in the market for so many years and providing very good quality goods and services, so I can easily buy those products and services। Next, it assures consumers of the goods, quality of goods and services। कंज्यूमर को अश्योर करता है कि जो मेरी अंडरलाइन गुड्स है या जो प्रोड्यूसर ऑफ द गुड्स है, they're into market for so many years and producing high quality goods, so consumer as soon as they see the label, they see the brand,
They can easily rely on the packaging, they can easily rely on the manufacturer and buy the product. It creates business goodwill and brand awareness. जैसा ही मेरा एक ट्रेडमार्क रजिस्टर होता है या अप्लाई भी होता है, वो एक गुडविल प्रोसेस, क्रिएशन ऑफ गुडविल प्रोसेस शुरू हो जाता है और ब्रांड की अवेयरनेस, मैं भी अवेयर होता हूँ कि कोई मेरा मार्क इन्फ्रिंज तो नहीं कर रहा है, मैं भी उसकी प्रोटेक्शन के लिए वेरियस मेथड या स्टेप्स उठाता हूँ सो दैट आई कैन सिक्योर माय इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. It advertises the product as well as distinguishes it from other products. जैसे ही मेरा नाम अलग है तो मैं उसको एडवर्टीजमेंट के लिए यूज कर सकता हूँ. जैसे कि मेरा नाम मान लीजिए, टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ सी इंस्टीट्यूट लोगो एंड आईसीएसआई इंस्टीट्यूट लोगो, they use their logos while advertising various goods and services, the various seminars. Most common thing is their logo. It creates intangible asset which is advantageous to the organization. जो इंटेंजिबल एसेट्स होती हैं, इस जो आईपीआर होते हैं, सारी की सारी इंटेंजिबल एसेट्स होती हैं, कैन नॉट बी फेल्ड, इट कैन ओनली बी कीन. तो देखिए जैसे जैसे आपके सॉफ्टवेयर, जैसे कि आपके पेटेंट कैन नॉट टच देम, बट ये इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं जिनकी कॉस्ट ऑफ क्रिएशन बहुत थोड़ी सी होती है बट जिसका फायदा बहुत बड़ा होता है. यू मे क्रिएट अ ट्रेडमार्क विद अ कॉस्ट मिनिमम कॉस्ट ऑफ 20,000 rupees, but which may be shown in balance sheet with respect to an amount in crores. It is possible. It is seen as a primary evidence of legal ownership. ये मेरा पहला एविडेंस है, प्राइमरी एविडेंस है कि मैं इस चीज का मालिक हूँ, ओनर. जैसे मान लीजिए मैं एक मोबाइल फोन खरीदता हूँ सैमसंग का आज, और आई मेक द पेमेंट और वो बिल मेरे नाम है, तो आई एम द प्राइमरी, ये वो प्राइमरी एविडेंस है कि इसमें कि मैं उस मोबाइल फोन का ओनर हूँ. ऐसे ही जैसे ही रजिस्ट्रेशन आपका होता है या आप एप्लीकेशन डालते हैं डिपार्टमेंट के साथ, यू आर सेफली सीन एज अ लीगल ओनर ऑफ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. दिस इज अ प्राइमरी एविडेंस, major primary. It gives legal protection and infringement against infringement. जैसे ही मेरा ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड होता है या आईपीआर डिपार्टमेंट के साथ अप्लाइड फॉर होता है तो मेरे को अलग अलग राइट्स मिलते हैं. अगर मेरा ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है तो मुझे एज अ रजिस्टर्ड ओनर के राइट्स मिलते हैं अगेंस्ट वेरी सीवियर है अंडर सेक्शन 103, 104, 105 ऑफ द ट्रेडमार्क एक्ट. It gives statutory protection for 10 years at a minimal cost. जो मैंने अभी आपको बताया, अगर आप एक घर खरीदते हैं हो सकता है उसकी कॉस्ट 1 करोड़ हो, सकता है आप एक गाड़ी खरीदें तो उसकी कॉस्ट 10 लाख रुपए, बट इन केस व्हेन यू आर जनरेटिंग ट्रेडमार्क उसकी कॉस्ट एज लो एज कैन बी अराउंड 10 to 15,000 रुपीज, और हो सकता है उसकी बस 1 करोड़ हो. और उसका रिन्यूअल भी 10 साल के लिए होता है. की फीस, गवर्नमेंट फीस एज ऑन डेट इज 10,000 रुपीज. तो जो ट्रेडमार्क जनरेशन कॉस्ट है, प्रोटेक्शन कॉस्ट है एज लो एज 1,000 रुपीज. तो अगर आप देखें जो ट्रेडमार्क की जनरेशन और प्रोटेक्शन कॉस्ट है वो मिला के जो आपकी आईपीआर होता है, इट इज वेरी वैल्यूएबल इन द बैलेंस. नेक्स्ट, trademark registration in other countries worldwide on the basis of Indian trademark registration. जब मेरा इंडिया में ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो it serves as a basis for registration in the other countries. Suppose I have a trademark, registered trademark in India under class 45. I want to start my services in US under the same class. So the Indian trademark registration would serve as a basis or prerequisite for making an application in US. Registered brand can use R and unregistered brand can use TM in a superscript manner along with their brands. जो registered brands होते हैं, as soon as they get registered, they can use R in a superscript manner along with their brands. And uh, unregistered brands जो होते हैं वो TM लिख के अपने आप को मार्केट में पब्लिसाइज कर सकते हैं, एडवर्टाइज कर सकते हैं. इसका बहुत बड़ा महत्व रहता है कि जो आर लिखे हुए ब्रांड्स होते हैं, नॉर्मली पीपल स्टे अवे फ्रॉम इट. ये ट्रेडमार्क ऑलरेडी रजिस्टर हो चुका है तो वी शुड नॉट यूज दोज मार्क्स सो दैट कि हम अपने आप को जो हैवी लिटिगेशन कॉस्ट है, फ्यूचर कॉस्ट है, वो उनसे बचा पाए और अपना बिजनेस कैरी ऑन करें. इट वर्क्स एज अ ब्रांड एडवोकेट फॉर न्यू एंड एक्सिस्टिंग.
ब्रांड एडवोकेट क्या होते हैं, जैसे ही मेरा ट्रेडमार्क रजिस्टर होता है विद द ट्रेडमार्क अथॉरिटी और कोई उस ब्रांड को अप्लाई करता है, तो ट्रेडमार्क अथॉरिटीज आर वेरी विजिलेंट, दे डिसअलाउ दोस प्रोडक्ट्स, दोस ब्रांड्स जो इन्फ्रिंजिंग होते हैं या डिसेप्टिवली सिमिलर होते हैं विद माय ब्रांड. तो ट्रेडमार्क अथॉरिटीज आर टेकिंग ओनली 10,000 rupees for 10 years and protecting my brands for so many years. And जो मेरा रजिस्टर्ड ब्रांड होता है, इट्स मी एज अ ब्रांड एडवोकेट, वो मेरे लिए न्यू कंज्यूमर और एक्जिस्टिंग कंज्यूमर्स को बनाए रखता है. ब्रांड एडवोकेट बेसिकली मींस दे आर एडवोकेटिंग न्यू बिजनेस फॉर मी फ्रॉम माय ओल्ड एंड न्यू ब्रांड्स. तो ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के जो आपने फायदे देखे हैं, छोटी सी कॉस्ट में बहुत ज्यादा और बहुत बढ़िया से आपको ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के फायदे मिलते हैं. Thank you, Rajendra ji. This is from my side. Now you can take up the GST part on IPR things. Thank you. Thank you. Thank you. Now I will be talking about the GST part of it. Uh, ऋषु भाई प्लीज आप अपना साइल म्यूट पे कर दें, पीछे से थोड़ा कुछ आवाजें आ रही हैं, आप अपना म्यूट पर कर दें. या वीडियो ऊपर कैसे आएगी इसकी? Yeah, now we would be talking about the GST implication of it. Uh, my dear friends, the GST implication shall be divided into 4 steps. First of all, I would like to thank Rishu Bhai for having introducing the subject very nicely in this short span of time. Uh, First of all, yes, there are 4 steps into determining the GST liability or GST issues, taxability on the intellectual property right. Let me tell you that in GST law, there is no definition provided of the intellectual property right. And then we have to go to the common parlance of or the previous earlier jurisprudence. According to common parlance, it includes copyright, patents, trademark, designs, any other similar right to intangible property, as like Rishuji also mentioned about while talking about various intellectual property rights. So there are 4 steps to understand the taxability of the GST. One is Gulshin, can my screen be larger, enlarged? You are the moderator. Can my screen be enlarged? No, sir. Okay. It So, is it is in the large format only. okay, it is in the large format only? Hmm. Yes. Okay. Now the first question is whether IPR is an intellectual property right is a supply or not. So we need to check section 7 for that matter, whether it is, of course, it is sale, transfer, barter, exchange, rental, lease, like Rishu also mentioned about the license and the assignment. So we'll be talking about that also. So when we say section 7, first is that it is a transfer, it is an activity, and it is in the course or furtherance of business. Like he also mentioned that if it is not used in the business, then it cannot be a trademark. So similarly, in the course or furtherance of business is a criteria under section 7 of the GST Act also. And then it has to be made by a person for a consideration. If all these conditions are met, so it becomes supply. Largely all these conditions are met and the transaction or any activity becomes supply. Next question arises whether it is goods or services. So classification is important. So as per schedule 2, entry number 5 clause C, it has been
decided that temporary transfer or permitting the use or enjoyment of any intellectual property right shall be considered to be service. So, as there is no transfer of title of goods, this is only belonging to the services part. And then next question arises, what at what rate it shall be taxed? So we have divided the tax rate. We have taken the tax rate from notification 11 by 2017 CTR central tax rate only issued on 20th June 2017. Yeah, the rate is being divided into three parts: copyright, patent, and trademark. For a copyright, if it is relating to goods, permanent transfer or temporary transfer, or permitting the use or enjoyment of any intellectual property right belonging to goods, then the rate of tax shall be 12%. But if it is relating to information technology software, then it will be 18% in case of copyright. If in case of patent, the rate of tax shall be 12%, and in case of trademark, the rate of tax again shall be 12%. And the rate of tax shall be same in case of license or in case of assignment also. How the tax is to be paid? Last step in the taxability of GST on intellectual property right. We have to identify who has to pay the tax, whether it is under reverse charge mechanism or under forward charge mechanism. In order to determine, we have to refer to notification 13 by 2017 CTR. Now, in that, there are two entries. One is about by the music composer or photographic artist, transfer or permitting use of copyright to the music company or the producer. In that case, the producer or the music company has to pay the tax under reverse charge. Another entry in 13 by 2017, the author of copyright under section 13(1)(a) of the Copyright Act 1957, if he is providing services of copyright material to the publisher which is located in the taxable territory, then the publisher which is located in the taxable territory is required to pay tax under reverse charge. The rate of tax shall be according to 11 by 2017, which is mentioned earlier. And in case of import of services, if it is considered to be import of services, if the supplier is outside India, recipient in India, place of supply is in India, then it shall be considered to be import of service under integrated CGST, Integrated Tax Act. So in that case also, it will be under reverse charge. Other than these three, rest everything under intellectual property right will be taxed at under forward charge, and the rate of tax shall be 18%, other than those which is mentioned in 11/2017. Because if any rate is not mentioned in any notification, then it shall be under the residuary category and 18%. So rest all situations shall be taxed under intellectual property right at 18%. So this is all about the GST implication. Now I would like to again thank Rishu Bhai for sparing his valuable time and coming here and sharing his wonderful knowledge. I would like to thank his wife Neha also for continuous support to all of us. Thank you very much, friends, for watching this video. Thank you, friends. Thank you, Rajendra ji. Thank you.